Hey guys, welcome to my channel. This is Akash. On this channel, you are going to get the videos pertaining to the national and international issues, science and technology, military affairs, as well as the book reviews. So today's video is all about the Agnipath scheme, which is known as to be the tour of the duty scheme, and it has been recently implemented by the Government of India for the enrollment of the personnel below the officer rank, or I would say for the recruitment of the soldiers in all the tri services. So this scheme was initially conceived in the year 2020 under the aegis of Department of Military Affairs, and it has been said that the whole idea was the brainchild of the CDS Bipin Rawat. And after carrying out the discussion for about 2 years and the studies also, the Government of India has finally implemented this scheme on the 14th of June 2022. So what is this Agnipath scheme? It is a new recruitment scheme that has been implemented into the armed forces, by which the recruits are going to be known as the Agniveers, and the whole model basically the selection process would be the all India merit basis instead of the open rally or the central rally which used to happen earlier. And by this process, the soldiers would be recruited for the period of 4 years. It means that they would be serving in the respective service for a period of 4 years, and after the 4 years are completed, only 25% of them would be retained for the permanent enrollment. And it has been said that the government has launched this scheme so that the more young people should join the army, as well as the age profile of the armed forces should look more young. And as of now, the age profile of the armed forces is between 30 to 32, and by introducing this scheme, the age profile would come down about 4 to 5 years. That means the age profile would be between from 22 to 25 by this scheme. सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी एज 17.5 से लेकर 21 ईयर्स की होनी चाहिए. एंड ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, कि सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पे होगा. एंड आफ्टर द 4 ईयर्स आर कंप्लीटेड, जो परमानेंट एनरोलमेंट किया जाएगा वो रिक्रूट्स आई वुड से द सोल्जर्स होंगे, उनकी 4 ईयर्स की जो सर्विस है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाएगा. So what are the conditions for the Agnipath scheme? Basically, in this scheme, the Agniveers would be enrolled in the armed forces for the period of 4 years, and these 4 years will include the training period of 6 months. And once the 4 years have been completed, all of them would be offered an opportunity to apply for the permanent enrollment in the armed forces, but it would be granted based on the organizational requirement and the policies of the armed forces at that point of time. And जो परमानेंट एनरोलमेंट उन्हें ग्रांट किया जाएगा वो उनकी 4 साल के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक पर्टिकुलर बैच के सिर्फ 25% को ही परमानेंट एनरोलमेंट ग्रांट किया जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर इस साल में 100 लोगों को रिक्रूट किया गया है, तो जब उनके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और वो सभी जब अपना परमानेंट एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, तो उनमें से मैक्सिमम सिर्फ 25 लोगों को ही परमानेंट एनरोलमेंट ग्रांट किया जाएगा. इसके साथ साथ ये जो एप्लीकेशन परमानेंट एनरोलमेंट की होंगी, ये भी एक सेंट्रलाइज मैनर में ही कंसीडर की जाएंगी. और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये पूरा एनरोलमेंट प्रोसेस एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम होगा फॉर ऑल दी 3 सर्विसेज, एंड दिस विल बी ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस. एंड और चूंकि ये टेन्योर 4 ईयर्स का हो चुका है, एंड साथ के साथ सिर्फ 25% को ही परमानेंट एनरोलमेंट मिल रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए किसी को अगर ये लगता है कि सिलेक्शन नॉर्म्स या फिर जो मेडिकल क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया में कोई एग्जामिशंस मिलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे. एंड फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो है वो 90 डेज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम स्टार्ट हो जाएगा. बेसिकली जैसे 14 जून को इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अराउंड 14 सितंबर से पहला रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फाइनेंशियल पैकेजेस. बेसिकली कहा गया है कि अग्निवीर जब को रिक्रूट जो किया जाएगा, उनकी जो पे है वो बिटवीन 4.76 टू 6.92 लैक्स होगी. और उसके अंदर जो अलाउंसेज उन्हें प्रोवाइड होने लाइक जैसे रिस्क एंड हार्डशिप अदर अलाउंसेज, जैसे जो कि आज भी एक जैसे एक नॉर्मल सोल्जर, रेगुलर सोल्जर है, उसको काफ़ी तरीके के अलाउंसेज हैं. लाइक कि सियाचिन में भी इज डिप्लॉयड तो सियाचिन अलाउंस होगा, फिर फील्ड अलाउंस होगा, फिर अगर वो काउंटर इंसर्जेंसी में है तो उसको सीआई अलाउंस भी प्रोवाइड होगा, ड्रेस अलाउंस है. तो वो सारे के सारे उन रेस्पेक्टिव सोल्जर्स को भी एप्लीकेबल होंगे, बट जस्ट फॉर देयर टाइम दे आर इन दी सर्विस. एंड उसके बाद जब वंस द 4 ईयर्स आर कंप्लीटेड एंड दे आर गेटिंग रिटायर्ड, तो उस टाइम पे उनको एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, विच इज बेसिकली लमसम अमाउंट. और वो कहा जा रहा है कि इट वुड बी अमाउंट ऑफ 11.71 लैक्स. इस 11.71 लाख में तीन तीन पार्ट्स हैं बेसिकली, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा. इस जो सेवा निधि पैकेज है, इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो तो इंडिविजुअल का खुद का होगा, एंड 50% गवर्नमेंट करेगी, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो एक इंटरेस्ट होगा. और कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेवा निधि स्कीम है ये बेसिकली इनकम टैक्स से फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगी. एंड आफ्टर द 4 ईयर्स जो रेस्पेक्टिव सोल्जर्स हैं उनको कोई भी ग्रेचुटी या पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड उसके साथ साथ जब तक वो सर्विस में हैं उतने टाइम पीरियड के लिए उनको नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ 48 लाख रुपये, बेसिकली उनको 48 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो जिसके लिए उन्हें खुद से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है.
तो नाउ हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में पे एंड बेनिफिट्स। लाइक जैसे फर्स्ट ईयर में कोई रिक्रूट, अगर रिक्रूटमेंट कोई सोल्जर रिक्रूट होता है, तो उसका जो फर्स्टली सैलरी होगी वो 30,000 होगी, लेकिन उसको इन हैंड 70% ही मिलेगी, बिकॉज उसका 30% जो है हर महीने जो उसको लास्ट में मैंने बताया सेवानिधि पैकेज है उसके उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो उसका फर्स्ट सैलरी हर महीने 9,000 रुपये होगा, कटेगा फर्स्ट ईयर में, और उतना ही इक्वल अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी। और करते इसी तरीके से 4 साल कंप्लीट होने पे वो टोटल अमाउंट बन जाएगा उसकी तरफ से 5.02 लाख, और उतना ही टोटल अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी, एंड तो इट कम्स टोटल आ जाता है 10.4 लाख। एंड आफ्टर दिस जो इस पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो उसको वापस दे दिया जाएगा एज अ लमसम ऑन रिटायरमेंट, दैट इज द 11.71 lakhs. Now let's see about what are the compensation would be provided. Like agar if any soldiers get martyred on the line of duty, so he would be given an insurance for about rupees 48 lakh. For that he has not to contribute anything. Basically 48 lakh rupees उसे दे दी जाएंगे, जिसके लिए उसे कोई contribution नहीं करना है। एंड साथ की साथ अगर उसकी डेथ 4 साल से पहले, मतलब लाइक 2 साल या 2.5 साल में भी हो जाती है, तो उसके जो बचे हुए सर्विस पीरियड है, लाइक 4 साल में से 2.5 साल गया तो 1.5 साल बचा, तो उस 1.5 साल का पैसा की सैलरी भी उसको पूरी तरीके से दी जाएगी अलॉन्ग विद दैट सेवानिधि पैकेज। एंड उसके अलावा उसको एक्स ग्रेशिया अमाउंट 44 लाख रुपीज़ का भी दिया जाएगा। नाउ कमिंग आउट टू द डिसेबल कंपनसेशन, अगर किसी भी सोल्जर को कोई भी चोट या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी होती है, तो उसका जो कंपनसेशन है उसकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। लाइक इफ अ सोल्जर गेट 100% डिसेबल्ड, तो ही वुड बी given 44 lakh rupees. If he is disabled 75%, then it would be he would be given 25 lakh rupees. And if he get disabled for 50, if he get 50% disability, then he would be given a 15 lakh rupees. इस स्कीम से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। वो किस तरीके से है? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव अ लार्ज सेविंग टू दी स्टेट, बिकॉज इट अकॉर्डिंग टू स्टडीज इंडियन गवर्नमेंट का जो डिफेंस बजट है उसका 39.4% is going towards the pay and the pensions of the active personals as well as the ex servicemen. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत टाइम से प्लान था कि उस 39.4% को कम कैसे किया जाए। विद दिस स्कीम अब क्या होगा कि सिर्फ 25% जो रिटेन होंगे उनको ही वो पेंशन एंड वेरियस स्कीम्स एप्लीकेबल होंगी, बाकी 75% को नहीं एप्लीकेबल होंगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनिक अपॉर्चुनिटी है ये नेशन यूथ, बिकॉज हमारा जो नेशन का यूथ, हमारी कंट्री का जो यूथ है, ये ऑलवेज वांट्स टू जॉइन द आर्मी बिकॉज ये इज द पैशन फॉर द यूनिफॉर्म एंड फॉर सिक्योरिंग द नेशन। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है एज अ टूअर ऑफ ड्यूटी। एंड थर्डली इसमें कहा गया कि विद दिस स्कीम आर्म फोर्सेज की जो एज प्रोफाइल दैट इज गोइंग टू बी लेस एंड इट विल लुक मोर यूथ एंड डायनामिक, एज वेल एज गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल पैकेज भी दे रहे हैं, विच इज आई सीरियसली डाउट। एंड फिर कहा गया है कि इसके थ्रू जब वो रिटायर जो सोल्जर्स हैं आफ्टर देयर टूर ऑफ ड्यूटी ऑफ अबाउट 4 years, जब वो सिविल पार्लेंस में जाएंगे, तो दे वुड बी अ वेरी स्किल्ड एंड वुड बी डिसिप्लिन्ड। एंड उसके बाद उनको काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं, विच आई एम अगेन आई वुड से इट इज़ अ वेरी डाउटफुल क्वेश्चन, इज इट वुड बी देयर और नॉट। Talking about the disadvantages based on the feedback of the retired army officers, JCOs, and other rank, is that now the armed forces would be facing a very big challenge with this scheme, because now they won't be having their experience and the skilled soldiers that can deal with any kind of the hostilities. And our nation is already being surrounded by the two hostile nations, one is China and one is Pakistan. And with that, we are fighting with the terrorism also, which requires that a soldier must be experienced. He must know the tactics of the enemy so that he can deal with them successfully. But in this case, it is not so. So it is going to be a bigger challenge. Another challenge, or I would say the disadvantage, is the lack of loyalty towards the unit or the lack of regimentation. If we see a normal regular soldier who comes into the army or the air force or the navy, or when he retires, he spend a very long time with that unit, so he has that sense of belongingness or the loyalty towards the unit. But with this tour of duty scheme, the Agniveers who would be coming just for the 4 years to serve in the army, will they have that kind of loyalty? It is going to be a very big question. And due to this only, that for these 4 years of tenure, the chances of the cases of the indiscipline are also likely to rise, because he are going to spend just for 4 years, they might have the tendency that doesn't matter, whatever they will do, it will doesn't matter, because after 4 years they have to go outside. So it is also being said that this is also going to be a very big challenge. And fourth disadvantage I would say is that although the people youth of our country is having a very high motivation to join the armed forces, because they have the passion to serve the nation, along with that I would say they have in their mind that
the armed forces are going to have given them a job security as well as a very good amount of the salary, and after they retire they are going to get the benefits of like the pension, medical schemes. But with this implementation of this scheme, they will not get any kind of this benefits. So I would say with this, the motivation factor which promotes the armed youths to join the armed forces might decrease. Another disadvantage is that the government has also said that with this the re-employment opportunities would be more for them. But is it so? Because after the 4 years when they are coming out from the armed forces, are they getting any kind of some qualification or something that will promote them to join the another career options, or they are getting some, or the government is keeping some reservation in civil sectors so that they can be really easily absorbed in those kind of sectors? So it is going to be a very big question. Another challenge is that these youths which are came out from the army after 4 years, they have been trained in the operating the weapons as well as they know that what are the tactics of the armed forces, so they can be the easily target of the anti-social elements, then can use them to promote their anti-national activities. Along with that, the another challenge what the government hasn't seen, that they haven't run any pilot project with this. They have directly implemented this scheme directly to the armed forces only. What I personally feel, that they should have introduced in the paramilitary forces first of all to test the suitability of this project, whether this works or not, what are the pros and the cons, and according to that they should have implemented in the armed forces, so that it would be a better option and it won't have endanger the security of the nation. But rest, it would be seen in the future कि इस स्कीम की वजह से क्या पॉजिटिव्स होने वाले हैं, क्या नेगेटिव्स होने हैं. दीज वर द व्यूज विच हैव गैदर्ड फ्रॉम दी सोशल मीडियाज, जो कि फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं. बाकी हमें धीरे धीरे इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद पता लगेगा. वी हैव कम टू with this we have came to the end of this video. I hope you have really enjoyed it, and you are requested to please like, subscribe and share this video, and for more videos like this please subscribe this channel. Thank you.